हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे इन द लिस्ट एज वेल एज वील आल्सो लर्न हाउ वी कैन हैंडल द नेस्टेड लिस्ट. दो वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस in my previous videos I've already shown you how to access the elements of the nested list, but इसमें थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्लाइसिंग पहले क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास कोई भी लिस्ट होती है या आइटरेबल ऑब्जेक्ट, बेसिकली जैसे स्ट्रिंग्स हो गए, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो अगर उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट को extract करना है using the index number, that's called as slicing. So I would like to just quickly revise the definition that slicing basically is a concept which is allowing you to extract a section or specific number of elements in the consecutive order from, or maybe alternate elements or jump every fourth element, so specific elements in a particular given sequence, one after the other. So if I just have to show that to you through a diagram, just have a look. That suppose I have a list which is this. All right. So you're supposed to remember that every number that you're having in a list is assigned an associative index number. So the first value, that is 1, has the index number 0, that can be extracted from the index number 0. Similarly, if you look at index number, say for example 10, that has a value 0. If you're looking at the index number 6, it has a value 6. If you're looking at the index number 4, it has a value 7. So that's positive indexing. It also supports the negative indexing, but it goes in the opposite direction. So if you look at the negative indexing, the last element is given the index as -1, -2, and it goes on going till -15. So if we have to take the same example, and we have to see that how indexing works, just have the look at the following cases. If you see that there is a list which has been taken with the given values of 1, 5, 2, 6, 7, 2, and so on, when you write print a with colon value, that simply means that you are allowing it to show you all the values. Basically, you want to extract all the values. So either you can write with a single colon, or you just write print a. It will going to work in both the cases. Remember, what does a colon do? See, colon जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग के ना 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं. पहला पैरामीटर, अगर जैसे मैंने ए लिस्ट बनाई 1, 3, 5, 6, 8, 9, सो आप 3 पैरामीटर्स याद रखेंगे. पहली लिस्ट की जो पैरामीटर होती है वो होती है स्टार्टिंग वैल्यू. मतलब यहाँ पर आएगा, 2 कोलन्स एक्चुअली आते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका स्टार्टिंग वैल्यू. यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि आप हर बार अभी हमें स्टेप भी करना है, तो हमारे यहाँ पर आती है एंडिंग वैल्यू और यहाँ पर आती है स्टेप वैल्यू. सो बेसिकली क्या मतलब होता है इसके अंदर कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है और कितनी एलिमेंट्स को जंप करना है. विच मीन्स बाय डिफॉल्ट यू आर स्टार्टिंग व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग ओवर देयर, you just put a colon. That simply means that you are starting from the location 0 and you're going till the last location, and you will going to see all the elements just like this. Okay, now if I say I would like to print starting from location 1 and all the values, and you're not putting anything after that. Okay, so you will going to see from 1 2, that means 3, 5 से लेकर 3 से लेकर 9 तक, बिकॉज 3 इज एट लोकेशन नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 1. अब आप बोलेंगे मैम अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दूँ तो क्या होगा. अब आप देखिए, आपने कोई कोलन नहीं यूज़ किया, इसका मतलब आप स्लाइसिंग नहीं कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, आप 1 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है सिर्फ उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3. So you have to use colon so that you can use the concept of slicing. Now suppose I just want to say colon colon and I say 2. Now what does that mean? This means the default starting value is 0. The default ending value is whatever is the length of the string. But when you're printing
2, सो 2 का क्या मतलब हो जाता है, 2 का मतलब हो जाता है आफ्टर एवरी सेकेंड एलिमेंट. सो स्टार्टिंग इज 1, देन 1 के बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा हो गया, 1 के बाद 2 नहीं हुआ, 5 हो गया, 5 के बाद 6 नहीं हुआ, 8 हो गया. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, 5 एंड 8. इसी तरह से अगर हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट कोलन कोलन -1, मतलब आप ऑटोमेटिकली स्टेप वैल्यू -1 दे रहे हैं, तो ये भी स्मार्ट है इंटरप्रेटर, और ये स्मार्टली इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले लेगा, लास्ट इंडेक्स, बिकॉज अब आप रिवर्स ऑर्डर में जाना चाह रहे हैं, -1 -2 -3. सो इट विल गोइंग टू display the list in the reverse order, and you will see the answer is 9, 8, 6, 5, 3, 1 and so on. Similarly, if I am saying I would like to display this as same, मुझे जाना है -3 और मुझे स्टार्ट करना है -1, let me make it at -5 and I want to go as -1. So how will I see the answer, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है से लेकर एंड वैल्यू, सो -1. लेकिन देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज अब आप करना क्या चाह रहे हैं, -1 में -1 डालेंगे तो -6 हो जाएगा ना. सो आप यहाँ पर 1 डालेंगे, दैट मीन्स -5 से लेकर -1 तक जा रहे हैं. यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग in terms of the value. So you will first have the value at the -5th location, then -4, then -3, then -2. ऐसे करते करते अब आप 2 तक आएंगे, and this is how you will going to see the answer. So let's see what was there at -5 location. This is -1, this is -2, this is -3, this is -4 and this is -5. So you're starting from here. If you would have written minus तो ये चलता ही नहीं, बिकॉज इतनी स्मार्टनेस तो वो भी दिखाता है कि इसमें कोई एंडलेस लूप थोड़ी ना है हमारे पास. तो अगर आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो -5 के बाद फिर क्या आ जाएगा, इसलिए उसको क्या दिखा देगा, आपको एक ब्लैंक लिस्ट दिखा देगा, क्योंकि आपका आंसर तो आया ही नहीं ना इसके अंदर. -5 से आप उल्टी डायरेक्शन में कहाँ जाएंगे. Therefore, first parameter is always the starting value, the second parameter is always the ending value, and the last parameter is always the step value. And this is what I have shown in the example also. So when we are saying ::2, I've just told you start from 1, keep jumping at 2 locations. If you are having this one, the next value is 6 colon, which means it's starting from index number 6, and you can see that 6th index number जो है वो कहाँ से value start हो रही है, 6 से. So index number 6 से value start होके end तक जा रही है, therefore it is going till 3. When you're saying -7 to -12 to -1, so starting value is -7, and since it's getting decreased with -1 value every time, therefore you go at -7, then -7 -1 will become -8, -8 -1 will become -9 and so on. So I think using this diagram you can always now understand how the slicing is working. Just remember that the starting first parameter before the colon is the starting value, the second colon is the ending value, and the last value after the second colon is basically the step value. That's how slicing occurs. After this, we will just understand what is basically a nested list concept. Nested का मतलब होता है, जो अभी तक हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं लिस्ट के अंदर. अगर ये एक एग्जाम्पल देखें तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है. नेस्टेड लिस्ट में मतलब अगर 1, 4, 5, 3 जो है, that is my first element in the list, which is accessed using the index number 0. The second element in the list is 1. The third element in the list is 2. The fourth element is just 89 because it's not a list. The fifth element is 90, which is 4. So if I have what is the length of this list, the length of this list will be 5 from 0 to 4. But remember this thing that अगर मुझे सब लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे अगर 1 को एक्सट्रैक्ट करना है तो A0 के 0th इंडेक्स पे एक्सट्रैक्ट करना. सिमिलरली A के 0 के 1 इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, A के 0 के 5 में वी हैव द वैल्यू 2 and so on. So basically you can extract, but now when you go to the second element, that means at index number 1
and I would like to extract 5, 22, 51, then I have to say A10 is 5, then A1 22, A11 is 22, then A12 is 51. Similarly, A20 is 7, A21 is 34, and A22 is 6. But we don't have, because at subscript number 3 we don't have a list, therefore we're going to just simply say A3 is 89, A4 is 90. That's how you basically extracting. So here an example is given, which is basically we are trying to just tell you that I am extracting every element. I'm extracting A0, I'm extracting A1, A2, A3 and A4. So out of these 5 elements, whichever are the list, only those things will be printed directly, otherwise it will be written as not a list. So जैसे ही I के अंदर एक list आई, तो through type of I हमेशा क्या return करता है? List. So it is checking whether it is a list or not, which is obviously true, and if it is true, it is printing the value, and therefore you will going to see this particular answer. So 1453 is printed, similarly 5, 22, 51 is printed, similarly 7, 34 and 6 is also printed. And if it is not a list, because 89 and 90 are not a list, and your if condition will become false, and that's what you will not going to see as the correct answer. Now let's see few programs which have been suggested by CBSE. If I need to find out the maximum and the minimum value in the given list, then there are two ways of doing it. One is a very smart way and a short way, or a Python way is what you can say. How? You just provide a list and use the max and the min function. That's it. If you want to do it in a programming way, just say A is equal to this, and you're assuming that at the 0th location you have the minimum or the maximum value both. Just start with the loop and check. Go traverse from, because first value is already there in MA and MI, so start from the second value, which means 6 onwards. And thus the value 6 is at index number 1. Therefore you will be basically checking all the values from 6 to 2, and in case the maximum value is smaller than the next value, that means that is not the maximum value, and therefore you rechange or replace it with the value of AI. Similarly, min will only be min if it is smaller than the rest of the values. If it is not, then just keep replacing it. So these are two ways of doing the same thing. The next question is, if I need to find out whether we need to find the mean of the numeric value. See, देखिए mean किसी भी चीज़ का क्या होता है? Sum of all the values divided by the total number of values. अब हमें पता है sum of all the values कैसे पता लगेगा? Using the function sum. और total number of values कैसे पता लगेंगे? Using the function len. That's a very smart way. इसी चीज़ को अगर आपको प्रोग्रामिंग से करना है तो आप कैसे करेंगे? You have A, same thing, you are just traversing the lists using the for loop, finding the sum of all the elements and dividing it by the total number of elements. So आपके लिए ऑब्वियसली जो पाइथन का तरीका है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन हमें एज अ प्रोग्रामर सब कुछ पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी कैसे कैसे पॉसिबल है. Then if I need to find or search for an element in a list, so I think now you've guessed it right, because ये इसके लिए भी एक सिंगल सा ही फंक्शन है हम जो यूज़ करते हैं. और हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था? इंडेक्स. लेकिन इंडेक्स में आपको याद हो तो एक प्रॉब्लम आती है. वो क्या आती है कि अगर वो नंबर नहीं मिलता है तो वो क्या जनरेट करेगा? एक्सेप्शन रेज करेगा. ठीक है, it will going to raise the exception. Just to avoid that exception, we are using try and except, and therefore it will, if the number is found, you will going to see the index number of the first occurrence. In case you don't, your interpreter is not able to find the given number, it will not going to display the index, rather it will going to raise the exception, and to handle that exception just say print not the number not found. Okay. Another way is using a linear search method, जिसमें हम exception की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी. linear search का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आप जाइए और एक एक करके एलिमेंट्स को सर्च करिए कि क्या वो वैल्यू है या नहीं है. सो
आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में आपने आप एक वैल्यू ली num which you need to find out and it's required to be searched. So you're just using a loop, you're traversing through the list, and then you're basically checking whether the num is equal to any of the values or not. The moment you find the number and it's same as the value of ai, you need to break the loop, because what is the point of comparing it with the rest of the values? जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाती है, आप उसी टाइम मैसेज डिस्प्ले करिए और आप लूप से बाहर निकल आइए. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल्स किसके साथ यूज हुआ है? इफ के साथ नहीं हुआ है, फॉर के साथ हुआ है. आपको आई होप ये वाली कॉन्सेप्ट याद हो. सो नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिए इसका भी. एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होता है. अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है then this else will be ignored. So if the number is found, for example you're looking for a number 90, it is very much there, it will going to display the number is found at whatever is the given location and it will break the loop. It will not going to go to else. Suppose you're looking for a number 99 and then not even once your if part will be true, therefore break is not executed. Because break is not executed within the for loop, therefore else will be executed and you will see the answer number not found. So this is a linear search method which was one of the suggested programs again by CBSE. So I hope children you've understood these interesting and smart programs and different ways of doing the same thing. So if there is any question, do write under the comment section, and if you like the video, don't forget to press the like button, share and subscribe, and have a lovely day.